Hello students, today I am going to take the circle chapter from class 9 and today I will start episode 2. Episode 1 जो है उसमें हम सर्कल का इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, थ्योरम्स भी 1, 2, 3, 4 जो कि काफ़ी इजी थ्योरम है वो हम दिखा दिए हैं स्टेटमेंट बोल के. Now I will start from theorem 5 today. After doing theorems, सर्कल में करीब 24 थ्योरम्स हैं, तो 4 I have already done 4. तो आज हम बनाएंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी दिखाएंगे कि कैसे थ्योरम को अप्लाई करके वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा. Now I am starting from theorem 5. So the statement of the theorem 5 is the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. What's the meaning? Statement का meaning क्या है? Now here we see that this is a circle with center O. PQ is a chord. Now, if I draw a perpendicular from the center to the chord, the statement says that OA will bisect PQ. And we have to prove this statement by applying the criteria of congruency. We have to prove this statement. ये statement को हमें prove करना है कि bisect किया है, यानी PA equals to AQ. ये हमें prove करना है. Statement तुम पहले पढ़ो and write the way I am writing here. एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है कि भाई शो दैट, तो तुम्हें एक पैटर्न में ही लिखना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, एक पैटर्न में लिखना पड़ेगा. जैसे लिखना पड़ेगा वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं. क्लियर? A circle with center O and a chord PQ is taken.
OA perpendicular PQ is also taken. To prove PA equals to QA, ये हमें प्रूफ करना है। इसके बाद आएगा कॉन्स्ट्रक्शन। OP and OQ are drawn. So we see here, we can say that PAO and QAO are two right angle triangles. Now, proof. In triangle PAO and triangle QAO, OP equals to OQ, radii of the same circle. OA equals to OA, common sides. Angle PAO equals to angle QAO. Since OA perpendicular PQ so OA perpendicular PQ, what does it mean? It means that angle OA or PAO is 90 degree and also QAO is also 90 degree. So we can say that triangle PAO is congruent to triangle QAO. The criteria is right angle hypotenuse side. You see these two are right angles, that means each angle is 90 degree. Hypotenuse means the radii of the circle, OP and OQ, and side means OA, which is common. OA is common. After congruency, we can say that PA equals to QA. PA equals to QA. That means A is the midpoint of PQ. So the statement here, the perpendicular, that is OA, from the center of a circle to a chord, that is PQ, bisects the chord. That means PA equals to AQ. Now it has been proved that the perpendicular has bisected the chord. Clear? Now we will go to theorem 6.
6 is actually the converse theorem of 5. थ्योरम 5 में क्या था कि परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड के ऊपर ड्रॉप करने से वो कॉर्ड को जो है इक्वली डिवाइड कर देगा. बट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम 6 इज जस्ट ऑपोजिट. द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. So same drawing. I am writing theorem 6. Now you see, from the statement, what is clear? That PA equals to AQ. This is the given condition. PA equals to AQ, that means A is the midpoint of PQ. From the center O, a line is drawn to PQ which touches PQ at A. We have to prove that OA perpendicular PQ. So I have written the necessary steps. That means a circle with center O and a chord PQ is taken. A is the midpoint of PQ, that is APA equals to AQ. To prove OA perpendicular PQ, construction OP and OQ are joined. OP and OQ are the radii of the circle.
proof in triangle PAO and triangle QAO. OP equal to OQ, radii of the same circle. OA equal to OA, common side. PA equals to AQ, given. So three conditions what we have written here. PA equals to AQ is given, OA equals to OA, common side, and OP equals to OQ, radii of the same circle. So these two triangles are congruent. PAO congruent, QAO. Congruency is S. साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ होता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. नाउ वी कैन से दैट एंगल PAO equals to angle QAO. It is by CPCT. Corresponding parts of congruent triangles. अगर ये दोनों triangle equal है तो we can assume that these two angles are also equal. PAO represent this angle from triangle PAO and QAO, this also represent an angle. But from the diagram, that is, we have already it is already stated that PQ is the chord, that means it is a straight line. So angle PAO plus angle QAO equals to 180 degree, straight angle. If we take this condition here, so PAO plus, so here we see that PAO and QAO, here we write PAO because I have already proved PAO equals to QAO. So PAO plus PAO equals to 180, twice of PAO equals to 180, therefore PAO equals to 90, thus OA perpendicular PQ. That means if this angle is 90 degree, then we can say that OA is perpendicular to PQ, and hence it is proved. The statement यहाँ पे प्रूफ करने क्या बोला था, OA perpendicular PQ, तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया. क्लियर? ये प्रूफ जो है इसको प्रैक्टिस करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Sometimes this theorem is also asked in examination and you have to prove that statement. Next, we will go to theorem 7.
Now theorem 7 states that equal chords of a circle are equidistant from the center. So we have to prove the statement. First of all, I write here theorem 7. Now, equal chords. This is the given condition. That means PQ is equal to RS. It is given. And we have to prove that OA and OB are equal. So, we write here the statement: a circle with center O is taken to equal chords PQ and RS are also taken. It is given that PQ equal to RS. To prove OA equal to OB. Construction. PO and RO are drawn. PO and RO are drawn. Proof.
stated in the earlier theorem that when a perpendicular is drawn from the center of a circle to a chord, it bisects the chord. So we know that OA perpendicular PQ and PA equals to AQ. Also OB perpendicular RS and RB equal to BS. It is given that PQ equals to RS. Since PQ equals to RS, so half of PQ equals to half of RS implies that PA equals to RB. Here PA equals to RB. Now in यहाँ पे इसके स्पेस कम है, यहाँ लिख रहे हैं इन ट्रायंगल PAO and triangle RBO, PA equals to RB, PA equals to RB. Proved. OP equals to OR. Radii of the same circle. And as we have stated that OA is perpendicular PQ and OB is perpendicular RS, so angle PAO equals to angle RBO. Each angle is a right angle. Right angle. Therefore, triangle PAO is congruent triangle RBO. And the criteria is RHS, right angle hypotenuse side. You see, this is hypotenuse, this is also hypotenuse, this is right angle, this is also right angle, and this side equals to this side. So these two triangles are congruent, that means equal in all respects. So we can write here that OA equal to OB. It is by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. And so it is proved that OA equals to OB. यहाँ पे प्रूफ करने बोला था OA equals to OB, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया OA equals to OB. अब सब स्टूडेंट्स को ऐसे ही लिखना पड़ेगा. अगर ये स्टेटमेंट प्रूफ करने देता है क्वेश्चन में, इफ इट इज आस्क्ड इन अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, तो ड्राइंग और ये सब स्टेटमेंट जो लिखा है हमने, ये सब कंप्लीट लिखना पड़ेगा, तभी जाके तुमको मार्क्स मिलेगा. बिकॉज इट कैरीज एटलीस्ट 3 मार्क्स. 3 मार्क्स तो होगा ही ये सब प्रूफ में. सो रिमेंबर दिस थिंग, एंड इट इज वेरी हेल्पफुल इन हायर स्टडीज ऑल्सो. कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुमको ये सब प्रूफ जो है काम में आ जाएगा अगर याद रहे तो. So remember these things throughout your educational career and also working life. तो इसको हम मिटा देते हैं.
Now, Theorem 8. Theorem 8, chords equidistant from the center of a circle are equal in length. Drawing यही होगा. In Theorem 8, the given condition is OA equals to OB, and we have to prove that the chord PQ is equals to the chord RS. तो थ्योरम 7 और 8 जो है रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब कि वो स्टेटमेंट जो था उसका कन्वर्स स्टेटमेंट ये वाला है. सो आई राइट द स्टेटमेंट हियर. Chords equidistant from the center of a circle are equal in length. तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन. It is given that a circle with center O and two chords PQ and RS are there PQ and RS are equidistant from O. So OA equals to OB. To prove PQ equals to RS, construction. PO and RO are drawn. हमने ड्रॉ कर लिया है PO and RO. अच्छा, और एक चीज जो हमने बोलने में यहाँ पे I have omitted the statement also here that OA OA perpendicular PQ and OB perpendicular RS. ये assumption लेना पड़ेगा, थ्योरम प्रूफ करने के लिए ये assumption लेना पड़ेगा. OA perpendicular PQ and OB perpendicular RS. Now, since OA is perpendicular to PQ, and from the earlier theorem, we can say that since OA perpendicular PQ implies that PA equals to AQ and
perpendicular RS implies that RB equals to BS. ये तो गिवन, ये तो गिवन. Now in triangle OAP and OB, अच्छा PAO, proof. In triangle PAO and triangle RBO we have क्या क्या है हमारे पास. OP equals to OR, radii of the same circle. OA equals to OB, given angle PAO equals to angle RBO. Each angle is a right angle. Therefore, triangle PAO congruent triangle RBO. क्राइटेरिया क्या है? RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS. So by CPCT we can say PA equals to RB, PA equals to RB, CPCT, PA equals to RB. Now twice of PA equals to twice of RB. We can say twice of PA equals to twice of RB. Now twice of PA means how much? Here I have already stated that PA equals to AQ. So twice of PA means PQ. We can write here PQ. ये और ये इक्वल है तो ये पार्ट क्या होगा? मतलब कि इसका डबल, PA का डबल क्या होगा? PQ होगा. RB और BS इक्वल है तो RB का डबल क्या होगा? RS होगा. And hence it is proved that the chords are equal to each other. ये हो गया थ्योरम 8. क्लियर? थ्योरम 8 है ये वाला. Now we come to theorem 9. Theorem 9 इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे अभी. theorem 9 का
chords of a circle. Two chords of a circle. Show that the one which is larger is nearer to the center. तो हमें ड्राइंग चेंज करना पड़ेगा. We have to change the drawing here. ड्राइंग चेंज करके हमको लिखना पड़ेगा. दिस इज सेंटर, P Q A R S B and it is center O. तो स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि दो कॉर्ड है पी क्यू आर एस. अब ये दोनों कॉर्ड इक्वल नहीं है. That means one chord is larger than the other, and from the figure we see that PQ is larger than the chord RS. We have to show that PQ is nearer to the center O than RS. So the perpendicular distance is AO, and from here the perpendicular distance is OB. We know that when a line is drawn from a point to a line, when a perpendicular, that means when a line is drawn from a point to a line segment, the shortest distance is the perpendicular. So we will assume that OA is perpendicular and OB is perpendicular. That means OA is perpendicular to PQ and OB is perpendicular to RS. ये हम लोग पहले assume कर लेंगे. Otherwise we cannot prove. Now we have to prove that PQ is greater than RS. PQ is greater than RS. That means OA is less than OB. अगर ये सेंटर के ज्यादा नजदीक है तो ये छोटा होगा, ये दूर में है तो ये बड़ा होगा. So we have to show that this is less than OB. ये थोड़ा टिपिकल है. First of all, it is given that a circle with center O
and two chords PQ and RS are taken such that PQ greater than RS। ये पहले स्टेटमेंट पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर लिखेंगे। OA perpendicular PQ and OB perpendicular RS। ये भी हम assumption में ले लेंगे। And we know that when perpendicular from the center O is drawn to a chord, it bisects the chord. अब proof में जाएंगे। To prove OA is less than OB, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन it is not necessary, ये दोनों होने से चल जाएगा। OP and OR are drawn। अब हम लोग प्रूफ क्या लिखेंगे? We know that a perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। So PA is half of PQ and RB is half of RS। ये हम लोग जो है पहले हमें मिल गया। अब इन ट्रायंगल PAO में क्या है? OP स्क्वायर इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस OAO स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। PO is right angle triangle। अच्छा, in triangle RBO we have OR square equal to RB square plus BO square। Now instead of OR we can write OP। OP and OR are radii of the same circle। It is necessary, so that's why I am writing here OP square equal to RB square plus BO square। अब दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी OP स्क्वायर है, यहाँ पे भी OP स्क्वायर है। So you can write, so this one PA square
plus AO square equals to PB square plus BO square. PB square plus BO square. Now PQ is greater than RS. It is given. So half of PQ is greater than half of RS. That means half of PQ, PA. PA is greater than RB. PA is greater than RB. ये तो हो गया. तो OP स्क्वायर, अच्छा PA is greater than RB, so PA square is greater than RB square. अब दोनों तरफ PA square plus AO square will be greater than RB square plus AO square. PA square plus OA square is greater than RB square plus AO square. ठीक है. अब क्या करें? PA square plus AO square is greater than RB square plus OB square. OB square plus PB square BR. PB कहाँ से आ गया? अब यहाँ जो PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर नहीं, कहाँ गया? PB स्क्वायर OR स्क्वायर, ओहो RB, यहाँ RB, PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर is OP स्क्वायर and OP square is RB square plus BO square. So we can write this. RB square plus BO square is greater than RB square plus AO square. Clear?
ये जो पी ए स्क्वायर है, ए ओ स्क्वायर है, ओपी स्क्वायर। अब ओपी स्क्वायर, ये ओपी स्क्वायर जो है ये आर बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, यहाँ पे देखो ओ आर ओ पी इक्वल है, तो ये एज्यूम करके हम लोग ये जो है ये यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस। नाउ कैंसलिंग दिस आर बी स्क्वायर एंड आर बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, बी ओ स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए ओ स्क्वायर और बी ओ इज ग्रेटर देन ए ओ। Ultimately we can write here that OA is less than OB। ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये जो थ्योरम है थोड़ा सा टिपिकल कहाँ है, देखो यहाँ तो पहले PAO राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, RB यहाँ आ गया। अब यहाँ से जो OR है, OR इक्वल्स टू OP, OR OP दोनों इक्वल है, यानी OR के जगह हम लोग वाला लिखेंगे OP स्क्वायर, क्योंकि अगर ये दोनों OP स्क्वायर, यहाँ पे OP स्क्वायर है, यहाँ पे OP स्क्वायर है, सो दिस स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू दिस स्टेटमेंट। नाउ फ्रॉम द गिवन कंडीशन PQ ग्रेटर देन RS, तो हाफ ऑफ PQ मस्ट बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ RS, दैट मींस PA ग्रेटर देन RB, so PA square is greater than RB square। Adding दोनों साइड पे हम AOs ऐड कर दिए, PA square plus AO square equals to greater than RB square plus AO square। तो यहाँ पे ये जो ये वाला पोर्शन है इसके बदले में हम लोग ये वाला लिखते हैं, this is equals to OP square and this is equals to OP square, so this must be equal to this, so that's why I have written this and again this। Now in both sides of this inequality we have RB square, cancelling this RB square we have BO square greater than AO square, square हटा दिए तो BO greater than AO, ultimately we can write OA less than OB। अगर BO जो है वो AO से ग्रेटर है यानी ये वाला छोटा है तो उसको हम उल्टा करके लिख दिए OA is less than OB and ultimately we got the proof OA less than OB। खाली टिपिकल एक जगह है, यहाँ जो है और यहाँ जो है, ये दोनों को इक्वेट करके यहाँ पे बैठाना होगा वहां, बस और कुछ नहीं है। 2 to 3 टाइम्स, 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा क्लियर। तो थ्योरम 9 तक आज हो गया, एपिसोड 2, एपिसोड 3 जो है वहां पे हम लोग थ्योरम 9 के बाद थ्योरम 10 से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। आज यहीं स्टॉप करते हैं।